Discussion is Yoga in Schools, Strengths and Challenges. The new National Education Policy of 2020 has suggested incorporating yoga into physical education, but despite the recommendation of including yoga in school and higher education curricula for over a decade, widespread and complete implementation is yet to occur. Stakeholders involved in incorporating yoga in school curriculum have faced various challenges in effectively implementing policies. What are these challenges and how can they be addressed? I invite our speakers, Dr. Satbir Bedi, Dr. Ishwar Basavaraddi, and Commander Abhijit Kumar to please come up on stage. Our first panelist is Dr. Satbir Bedi, Chairperson of the Punjab School Education Board. Dr. Satbir Bedi is a retired Indian Administrative Services officer from the AGM UT cadre with a distinguished career spanning over 3 decades. Madam has had the distinguished opportunity to work with the United Nations in Afghanistan. Madam holds a PhD in psychology and is a master trainer for the Department of Personnel and Training, Government of India. She is a fellow of the Cambridge University and played a vital role in training of principals. She is also an alumnus of Maxwell School of Citizenship and Public Affairs at Syracuse University, New York. It is an honor to have you, ma'am. Our next speaker is Dr. Ishwar Basavaraddi, former director of Morarji Desai National Institute of Yoga, Ministry of Ayush, Government of India. Dr. Basavaraddi is an accomplished yoga scientist, philosopher, and an eminent yoga master with over 35 years of teaching and research experience in the field of yoga. He is known for developing disease-specific yoga protocols and yoga protocols for various target groups. He has provided yoga education, training, and therapy to lakhs of yoga teachers and millions of yoga enthusiasts. He is one of the leading architects of the Common Yoga Protocol, a widely practiced yoga regime adopted by many across the globe. Thank you for being with us today here, sir. Our third panelist of the session is Commander Abhijit Kumar. Commander Abhijit Kumar was commissioned into the engineering branch of the Indian Navy in January 2008. An alumnus of the prestigious Defence Services Staff College, Wellington, he has completed his Masters in Defence and Strategic Studies from Madras University. A trained yoga enthusiast, he is presently posted at INS Shivaji and is carrying out the duties of training commander since June 2020. It is our honor to have you with us, sir. Our moderator for this discussion is our very own Shri Subodh Tiwari ji, CEO and Secretary of Kaivalyadhama. I request sir to please felicitate our distinguished guests. Dr. Satbir Bedi. Commander Abhijit Kumar. And Dr. Ishwar Basavaraddi. Thank you, sir. Over to you now. सभी को नमस्कार, प्रणाम. This is a very important panel discussion on
Yoga in education system, strengths and challenges. और यहाँ पर हमारे बीच जो पैनलिस्ट उपस्थित हैं, everyone has immense experience which will throw light on this subject. Since 1986, when we refer to the education policy, again and again we have found mention that yoga should be introduced, yoga should be inculcated in our education system. लेकिन अगर आज हम परिस्थिति देखें तो कुछ या किसी प्रकार से in some form yoga has been implemented, but there is a large scope where it can further be integrated in the right spirit. And that is what we are going to deliberate. The whole idea of this conference was, because Swami Kaivalyadhama's vision, he was very clear that yoga should start from the schools. अगर आप शालेय शिक्षण से योग की शुरुआत करते हैं तो it will become an integrated part of the personality of that child. फिर आपको बाद में सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती. हम सभी को पता है जब स्लेट क्लीन होती है लिखना आसान होता है, और जब एडल्टहुड तक व्यक्ति पहुंचता है तब तक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर सिखाना बहुत मुश्किल होता है. So that is what we are going to deliberate on. I am also a listener like you are, and I have been through this lovely journey with all the three panelists here. Just to, I feel like saying something in addition to the introductions which have been made. Dr. Satbir Bedi has an illustrious career. I have been in touch with her since she was Joint Secretary in Ministry of Education. And that was the time when International Day of Yoga was declared. So, and she was the person who organized the first conference, because she was also the chairperson of the CBSC. So 2015 में, and so many innovative ideas came through when she was organizing that conference that I learned. योग के बारे में मुझे पता था, लेकिन लोगों तक योग को बच्चों तक कितने अच्छे से पहुंचा सकते हैं ये उनसे सीखने को मिला. धन्यवाद. इट्स प्लेजर टू हैव यू. डॉक्टर ईश्वर बासवारेड्डी जी, हम लोग कहते थे द लोन क्रूसेडर इन न्यू दिल्ली ऑफ योग. वो डटे रहे योग के मूलभूत प्रकृति को बनाए रहे एज डायरेक्टर ऑफ द मोरारजी देसाई योग इंस्टीट्यूशन. सो आई वेलकम हिम, डॉक्टर बासवारेड्डी, एंड ही हैज बीन अक्रॉस. देखिए, हम वी आर स्पीकिंग ऑफ योग इन एजुकेशन सिस्टम. तो जब एनसीईआरटी में डिस्कशन होता था तो उसमें भी डॉक्टर बासवारेड्डी रहते थे. नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन में डिस्कशन होता था, उसमें भी डॉक्टर बासवारेड्डी रहते थे. यूजीसी में डिस्कशन होता था, उसमें भी डॉक्टर बासवारेड्डी रहते थे. तो ये जो टॉपिक है, आई थिंक ही इज वेरी रेलेवेंट स्पीकर एज अ पैनलिस्ट in this regards. And we have Commander Abhijit. मैंने अभी उनसे यही कहा कि आईने शिवाजी में छुपे हुए हमारे लोनावला के रत्न हैं, and person who's in Navy services but very deeply interested in yoga, and he is in charge of the training, so we will also have his view. So I will stop here and I'll request Dr. Satbir Bedi to start the session. And what we have proposed in this panel discussion is we'll have around 10 minutes to each speaker, and they will do the opening remarks, and then we will have question and answers. क्योंकि ये sessions जो हैं panel discussions आपके लिए हैं, and आपके मन में जो भी प्रश्न हो उसका उत्तर ढूंढने का हम सभी लोग प्रयास करेंगे. धन्यवाद. धन्यवाद. हाँ, have we been able to locate the song which? अगर रहना है तुम्हें हर दम fit, get up, stand up, no sit. उठो चलो अपनी नींद भगाओ, जाओ जाके एक योगा मैट लेके आओ. तो हो जाओ शुरू. सिर्फ 10 मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा. सिर्फ 10 मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा. टेंशन स्ट्रेस से
fresh रहो everyday my friend, concentration का बना रहे trend, तो हो जाओ शुरू। सिर्फ 10 मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। सिर्फ 10 मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। Hundreds of asanas, just pick up some, अच्छे से करो, लगाओ मन, easy हो या hard, discipline is the must, बनोगे healthy, योगा पे करो trust, तो हो जाओ शुरू। सिर्फ 10 मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। सिर्फ 10 मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। शीर्षासन हो या नौका आसन, मन से करोगे तो होगा सब डन, पद्मासन हो या सिंहासन, डेली करोगे तो बनेगा ये फन, तो हो जाओ शुरू। सिर्फ 10 मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। सिर्फ 10 मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। तेज दिमाग, शार्प मेमोरी, लिखो अपनी अब सक्सेस स्टोरी, बॉडी बने फ्लेक्सिबल, स्टेमिना विल राइज, करो योगा डेली, ये हैबिट बड़े नाइस, हो जा शुरू, डोंट करो थिंक, क्योंकि लॉन्ग रन में बस होगा विन विन। सिर्फ 10 मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। सिर्फ 10 मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। सभी को नमस्कार। कैवल्य धाम आना मेरे लिए घर आने जैसा है। इनफैक्ट मैं कल ही सोच रही थी कि सब डेफिनेशंस ऑफ होम में मेरे लिए ये सबसे सार्थक डेफिनेशन है। थैंक यू सुबोध जी। ये जो गाना आपने अभी देखा, ये जो छोटा सा हमने कार्टून देखा, ये हम लोगों ने 2015 में जब इंटरनेशनल योगा डे मनाने का पहला अटेम्प्ट हुआ था, मैं CBSE चेयरपर्सन थी और हम लोगों ने सब ने मिल के इसकी रचना की थी, इसलिए कि हम बच्चों तक जाना चाहते थे और बच्चों को ये बताना चाहते थे कि इट इज़ जो अभी कहा गया प्लीनरी सेशन में, इट इज़ एन एक्टिविटी विच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन लाइफ, इट इज़ एन एक्टिविटी विच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ पार्ट ऑफ our curriculum, and it is nothing threatening. It is सिर्फ चंद मिनट योगा, बड़ा फ़ायदा होगा, and this became quite a catch theme, and somewhere it is still available on internet. Somehow अभी ये बहुत यूज़ नहीं हो रहा, but आप लोग सबके थ्रू you are free to use it whenever, wherever you want. We have created it in CBSE for everybody. Having said that, my first point to be made on the subject of integration of yoga in school education is that school education is a very, very, very long drawn, very long process demanding a lot of patience. So people who think that we can just introduce something in school education and see results after 2 years are terribly misguided. They don't know what school education is. ये बहुत पेशेंस का काम है। एक पौधा लगाइए, उसको पानी दीजिए, उसको हवा पानी से धूप से हवा से बचाते रहिए और उसको लेते जाइए धीरे 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 to the time that it gives fruit. And I have been involved with school education since 1991, and somehow the plants that I had forgotten about suddenly bore fruit after 25 years. And then I was surprised that something that was so way back in the past of my career was suddenly the top-notch thing. One of the things is Rashtriya Pratibha Vikas Vidyalaya, which we started in Delhi, on which almost roughly based is the PM Shri school program now. So
So first thing, that whenever we deliberate on school education, we have to be prepared for patience and no hurried results. So similarly, yoga, which itself demands patience, can ये double jeopardy है. School education patience मांगता है और yoga भी patience मांगता है. So these things have to be thought of in that context. So time is the first thing जब हम consider करें. और दूसरा question ये आता है कि जब हम योगा की बात करते हैं तो हम उसको physical education से confuse करते हैं, जैसा कि पहले सेशन में भी कहा गया. Now बच्चों के दिमाग में इन दोनों को डीलिंक करना, ये भी अपने में एक बहुत involved process है. It cannot happen just like that. If we keep saying कि योगा करिए, but ये physical education नहीं है. It is something more. So we have to understand that this message also has to be created and transmitted. In 1996, when I was Director Education in Delhi, we had introduced two simple interventions. One was a few standing postures in the assembly in 100 schools. And the second was the introduction of Bhramari Pranayam after the lunch break, before the post-break classes started. And we studied that for a few years. And we did find that these things had helped, and they had brought some discipline, some better focus, and some other calming effects on the classroom management. Teachers found it useful and the students found it useful. And कल जब बात हो रही थी कैवल्यधाम की हिस्ट्री का जो वीडियो चल रहा था, उसमें 3 प्राणायाम की बात करी गई, भ्रामरी, अनुलोम विलोम और शीतली. तो ये तीनों हम सिंपल इंटरवेंशन से, we don't have to get into very complicated things to begin with, but we did get in good results with sustained, simple, straightforward efforts. अब ये सब चीज़ें कैसे प्रिपेयर हों, शायद हम लोग इस सेशन में कुछ सीखें और कुछ सीखने के लिए नींव डालेंगे. We'll lay foundations of learning from Kaivalyadhama, because I think there is no institute better suited in its clarity of thought and simplicity and expression for yoga than Kaivalyadhama, and I have visited many others. So what requires in-depth study for school education and school children is age-appropriate curriculum has to be developed. Age-appropriate syllabi have to be prepared for every age group of children, say class 3 to 5, class 6 to 8, class 9 and 10, class 11 and 12, because one size fits all नहीं चलता है योग में, और चलना भी नहीं चाहिए. जब हमारा ये syllabus और curriculum और syllabus develop हो जाए, then we have to develop the content. And again, Subodh, this is the place where I would highly recommend future conferences for developing age-wise content and training of teachers. I was chairperson of NCTE, and I realized that through an intervention of NCTE in the B.Ed curriculum, we could introduce yoga in the general curriculum, and besides that, we could have a special diploma course for which can be certified. But again, the real क्या है उसमें जो फांस है वो ये है कि हर जना कहता है कि मेरा योगा सबसे अच्छा योगा है, तो आपका योगा ठीक नहीं. Right. So हमारी जो institution, I wouldn't like to use the word conflicts, but maybe this is the usable word here. But inter-institutional हमारे जो differences हैं, that should be smoothened out if we want to make yoga acceptable to all. Because if we go on fighting amongst ourselves,
nobody is going to accept us. People are going to say, ये तो आपस में ही झगड़ा कर लें, पहले decide कर लें कौन सा योगा क्या है, तब उसके बाद हमसे बात करें. So I don't know, like I may be raising a slightly contentious point here. Uske baad we talk of delivery in schools and how delivery has to be done, whether it is through an optional subject or through a part of the curriculum or a hidden part of the curriculum, which is what I am going to attempt in the next 2-3 years in Punjab School Education Board. And I will seek help from anyone who wants to help me. Is how we want to deliver it and make yoga a part of lifelong learning. It cannot be that आपने exam pass किया, आपको yoga आ गया, या आपके नंबर आ गए, आपको योगा आ गया, या अब आप योग में पारंगत हो गए, या अब आपकी लर्निंग कंप्लीट हो गई, आप बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग बन गए. योग इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग. And it is a dynamic process, as has also been pointed out, and that dynamism of the process should never be overlooked. There is no one hard, fast rule in one time frame. Times change, as it was suggested. Now we have new methods, we have media, we have social media, we have Instagram, we have 100 other ways of popularizing the content, but we have to agree on the content. And specific protocols need to be drawn. And again, not putting too fine a point on it, but of course, putting a finer point on it is that the teachers have to be oriented and principals have to be aligned. Just this morning, I was having breakfast with Mr. N.D. Joshi, who was explaining in great depth and detail to me how he integrated yoga in the lives of the school children of Kaivalyadhama. And it was a fantastic learning for me. I heard him for 15 minutes, and I think I've learned at least half my knowledge has come from that one conversation. Thank you, Mr. Joshi. So people like him can be, yeah, of course. People like him are around and we have to listen to them. I have invited him to Chandigarh to come and speak to my principals, my teachers, and tell them how easy it is. He made it sound easy, but a lot of thought has gone into it, obviously. So principals have to be aligned, teachers have to be aligned, content has to be clear, and delivery methodology has to be figured out, which can be unique for each time frame or for each group of people. One question that comes to my mind is making yoga competitive, because to my mind, shifting the locus of control from within to a prize that is outside you, is that the best way of learning yoga or popularizing yoga? But this is a question which of course will be deliberated on during this conference later. I still think that sometimes the children, I have noticed, are not enthused unless there is a prize, unless there's a tangible benefit at the end, whether it is marks, whether it's a cash reward, whether it's a medal, whatever. But can we work on it? Can we give this particular question an in-depth thought with reference to yoga? Not to make it competitive, because cooking is a competitive thing, but if you see what are those contests on TV, some master chef competitions and all, I see those cooks and I think they are anything but relaxed. They are going mad with stress. And do we want to do that to yoga? The question of doing all, we can have very nice policies, we can have very well worded ideas and conference papers, but ज़मीन पे जाके उसे कैसे करना है
ये हमारा सबसे बड़ा सवाल, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। और उसके लिए हमें पूरा रास्ता दिखे ये ज़रूरी नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स लेके भी हम इस काम को कर सकते हैं, हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और ये कॉन्फ्रेंस उसमें, उस सिलसिले में मेरी नज़र में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। I would like to keep in touch with anyone who wants to help me with Punjab School Education Board, because I do want to take yoga to all the children, at least in my board. Thank you. Thank you, Madam. That was wonderful. Most important points came in, which we will deliberate when we have the discussion session. So I'll request Dr. Basavaraddi ji to kindly speak, and I think he also has a presentation. ओम शांति शांति शांति। Respected Chairperson, Madam Satbir जी, and मेरे परिवार के, योग परिवार के अहम सदस्य and the torch bearer, आदरणीय श्री सुबोध जी, कमांडर अभिजीत जी, सभागृह में उपस्थित मेरे पूज्य गुरुजन और मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं एक प्रेजेंटेशन किया था कल शाम को, लेकिन मुझे लगता है कि समय कम है, कि इसलिए कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद हम चर्चा में उसको विस्तारपूर्वक चर्चा करने की प्रयास करेंगे। इससे पहले मैं कैवल धाम जब भी आता हूँ, ये सिर्फ हमारा घर नहीं है कि परिवार है। जब भी आते हैं यहाँ गुरुजन से आशीर्वाद और प्रेरणा मिलती है, उसके साथ साथ सारे बंधु लोगों को मिलने का अवसर और उससे बहुत सुकून मिलता है। आज विशेष तौर पर मुझे कल ही आना था। ये हमारी संस्था सेंचुरी 1 शतक पूरा कर रहे हैं, उसका सेलिब्रेशंस कल से प्रारंभ हुआ है। उस संदर्भ में कैवल धाम के सारे सुबोध जी, ओपी तिवारी जी, बहुत सारे परिवार जन हैं, 100 साल से इस संस्था को, ट्रेडिशन को जीवित रखा है। आप सभी लोगों के ओर से, मेरे ओर से अभिनंदन करते हैं करतलों के साथ। आज टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट योगा इन स्कूल एजुकेशन। इसका मेरा ही 4 पहलू मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले साधक, मैंने 70 के दशक में 70s में टी कृष्णमाचारी जी के परंपरा से हमने चालू की। उसके बाद आता है कि हम शिक्षक हैं। शिक्षक की परंपरा जो कैवल्यधाम में और एक्सपेशली जो माधव दास जी के जो लीनेज है, इवन योगेंद्र जी है, सारे हैं, बहुत अच्छी ढंग से करीबन 70-80 साल से योग को एक एजुकेशन के रूप में इन दोनों इंस्टीट्यूशन से प्रमोट किया है। मैं ऑथेंटिकली बता रहा हूँ। और बहुत सारे टीचर्स, कैवल्यधाम का जो 1 ईयर डिप्लोमा, आज भी वो फ्लैगशिप डिप्लोमा है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमा एवर। मेरे टीचर भी यहीं से डिप्लोमा करके आए थे, बाद में हम भी यहाँ पढ़ाई की है।
इसलिए योग शिक्षक के जो रूपरेखा है उसका करिकुलम में यहाँ का टीचर्स, स्पेशली गंगुली जी यहाँ बैठे हुए हैं, घरोटे जी हैं, भोले जी हैं, बहुत सारे गोरे जी भी हैं, इन लोगों ने जो टेक्स्ट बुक तैयार किया, टीचिंग मेथडोलॉजी तैयार किया, वो बहुत अहम रहा योग को एक एजुकेशन स्कूल में एज ए योगा एजुकेशन लाने में। सो इसलिए वो कैवल्य धाम इसका गौरव पात्र होना चाहिए। क्रेडिट गोज टू कैवल्य धाम एंड इट्स एंटायर फैमिली introducing yogas in schools. At the same time, I cannot ignore the contribution of the Yoga Institute. दोनों एक मध्वदास परंपरा से आए हैं। तीसरा आता है कि शिक्षक के बाद हम संशोधन में आते हैं, रिसर्च में भी यहाँ साइंटिफिक रिसर्च 1920 से चालू हुआ है, 24-25 से चालू हुआ है। उसके बाद हमने अभी मॉडर्न मेडिकल कॉलेजेस में भी नागरत्ना जी, नागेंद्र जी उसको प्रमोट कर रहे हैं, और हमने सरकार में रहकर हमने अभी विशेष तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद योग को एक विशेष आयाम दिया गया। सो इसलिए हमने योग शिक्षा की बात करते हैं तो एक साधक, शिक्षक, संशोधक और योग प्रचारक, इन चारों को हमें लक्ष्य रखना चाहिए। वो करिकुलम में हमें कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन मुझे योग क्यों चाहिए? योगा गिव्स नॉलेज अबाउट द मैटर, माइंड एंड सेल्फ और द स्पिरिट। सिंपल, इट गिव्स द नॉलेज अबाउट मैटर, माइंड एंड स्पिरिट। सम आर ग्रॉस है, सम आर सेटल है, सम आर कॉन्शियस में चले जाते हैं। The methods used by yoga are sensory observation, logical reasoning or rational thinking, insight and introspection. Therefore, it is science. ये आस्पेक्ट हमने करिकुलम में नहीं लिया गया। हमने सारे आसन रखते हैं, लेकिन ये साइंटिफिक आस्पेक्ट्स वहाँ नहीं रहते, तो इट विल ऑलमोस्ट इट विल गो टू द रिलीजन और सेक्ट में चले जाते हैं। Then again you are going to become a failures. Therefore, it is an art. It should be applied aspect में art में आना चाहिए. It teaches us to how to live well, how to manage our life management, stress management. सारे चीज़ें हमें करिकुलम में दिखाते हैं। Meaningfully, peacefully, healthy. Most importantly, happy and healthy is more important. सो उसको हमें करिकुलम में लाएं कि वहाँ देखें। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि कोई एजुकेशन का जो अंत में है, हमें फ्रीडम, हम मोक्ष की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं। इन माय ओपिनियन योगा गिव्स अस फ्रीडम, फ्रीडम इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ, फ्रीडम इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ, दो इट हैज़ फ्रीडम फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सफरिंग। सो वो फ्रीडम कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें ऐसे ही विद्यार्थी तैयार करना चाहिए करिकुलम के जरिए, उनको फ्रीडम मिले थिंक करने की, बात करने की, सोचने की। आज हमने सारे ब्लॉक्स करके रखे हैं, उसको ओपन करें, लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, अपने बारे में, घर के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में। सो दिस शुड बी इंटीग्रेटेड इन आवर करिकुलम। वी आर स्टार्टेड इन 90s। पहले हमने DST में हुआ 5 योगा इंस्टीट्यूशन को चालू किया था 91 में। वहाँ से मुझे आई एम इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। सो बहुत सारी चीज़ें आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा योग में एक बार हमने एक पीक पर आ गए तो हमें 3 चीज़ें स्टूडेंट्स होते। एक अन्वयी, जो टीचर पढ़ाते हैं उसको एज इफ ब्लैंकली फॉलो करते हैं। एक होता है कि प्रत्ययी, मतलब है कि हार्डकोर है, मेरा टीचर जो बोलता है वही सही है। लेकिन हमें तीसरा तरीका का स्टूडेंट्स को तैयार करना है कि समन्वयी, हु कैन रियली गेट द नॉलेज, थिंक एंड व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर दैट। बिकॉज हमने ओवर द ईयर्स 5-6,000 ईयर्स जो भी हम कहते हैं कि वहाँ योग इवॉल्व हुआ है कि काल के अनुसार और देश के अनुसार, टाइम एंड स्पेस कहते हैं, उसके अनुसार उनका इवोल्यूशन हुआ है कि देन दैट्स वाई इट इज़ इन द रिलेवेंस।
आज के जगत में हमें क्या चाहिए उसके हिसाब से हमें बदलाव लाना चाहिए। सो ये इसलिए हमने ये चीज़ें हमें चाहना चाहिए कि मैं कुछ प्रश्न आपके ऊपर करके छोड़ देता हूँ, बिकॉज मेरा और 1 मिनट 2 मिनट है। सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करने में करिकुलम डिज़ाइन, टीचर्स ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेस, एज अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल, इस पर काम हुआ है पिछले 3-4 दशक से। इंटीग्रेशन विथ वैल्यू और हेल्थ एजुकेशन, हमने एनसीईआरटी में हेल्थ एजुकेशन के अंदर में फिजिकल एजुकेशन और योगा को लाए हैं। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है। देन रेगुलर प्रैक्टिस, हमने बहुत प्रॉब्लम होता है कि हमने 30 मिनट बाद एक हफ्ते में 1 बार करो 2 बार, बट रेगुलर प्रैक्टिस के लिए भी हमने सोल्यूशन निकाला है कि 5 मिनट तो कम से कम योगा ब्रेक करें। वो हमने वर्क प्लेस में किया था, वो हमने स्कूलों में भी कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ लंच ब्रेक से पहले 5 मिनट पर योगा करके छोड़े। देन असेसमेंट इवैल्यूएशन प्रोसीजर ला है, उसमें सुधार का ज़रूरत है। कम्युनिटी सपोर्ट भी हम लेते हैं, कम्युनिटी सपोर्ट, योगा इंस्टीट्यूशन सपोर्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉलिसी सपोर्ट और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का असेसमेंट का जरूरत है। सो कंस्ट्रेंट्स क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस है। टीचर्स ट्रेनिंग इज़ ए बिग प्रॉब्लम। मैडम ने बताया कि हर इंस्टीट्यूशन में गया तो वो अपना प्रोडक्ट तैयार करके बेचते हैं कि हमें योगा एज एन एकेडमिक, अभी मुझे लगता है कि 30 दशक से यहाँ देखता हूँ कि आई एम ट्राइड हार्ड टू प्रेजेंट योगा एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट। जैसे मैं फिजिक्स और फिलॉसफी का विद्यार्थी हूँ, वहाँ भी हर रोज़ झगड़ा होती थी, लेकिन एकेडमिक डिस्कशंस होते थे, झगड़ा होती थी वैल्यू पर। हमने निष्कर्ष पर आने के बाद उसको एक्सेप्ट करते थे हम। दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, एकेडमिक एनवायरनमेंट हैज़ टू बी क्रिएटेड इन योगा। वो ज़रूरी है कि वो टीचर्स भी ऐसे एकेडमिक चले, लेकिन हमने जो टीचर सिखाते नहीं वो लोग करिकुलम करने के लिए बैठ जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। सो सपोज एनसीईआरटी में सेनापति सर यहाँ बैठे हुए हैं कि एनसीईआरटी में गया तो वहाँ फिजिक्स में, साइंस में आ गए तो 30-30 साल वहाँ सीख कर आते हैं, पढ़ा के आते हैं, उन लोगों का एक्सपर्टाइज मिलता है। लेकिन हमारा योग में बहुत कम ऐसे मौका मिलता है कि बाद में वहाँ हमने फिजिकल एजुकेशन में और इसमें मेरा काम तो हमेशा लड़ना ही हो गया। एवरी टाइम आई हैव टू फाइट फॉर राइट थिंग टू बी डन विथ फिजिकल एजुकेशन एंड अदर सब्जेक्ट्स। सो ये करिकुलम में ये प्रॉब्लम है कि वहाँ मैंने पहले किया कि उसी के आधार पर करें। कल्चरल सेंसिटिव है, कहीं कहीं ग्रुप में इसका एक्सेप्टेंस नहीं होता है, पेरेंटल भी अपोजिशंस करते हैं, उसको भी एड्रेस करना है हमें। टाइम कंस्ट्रेंट्स है, इतना सारे हमने आयुष में जाए तो योगा इंट्रोड्यूस हो रहा है, बाद में आयुर्वेद भी घुसा दो, इसमें भी घुसा दो, कॉन्स्टिट्यूशन घुसा दो, सब घुसा कर उनको पूरा भर लेते, कुछ बाहर ही नहीं आता है। योग हमें स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए होते, लेकिन हमने स्ट्रेस बढ़ा लेते, इसको हमें थिंक करना चाहिए। देन असेसमेंट मेथड्स भी आजकल बहुत टेक्नोलॉजी आ गया, हमने वाईसीबी में स्टार्ट करने की सोच रहे थे। असेसमेंट एक्यूरेसी, जितना असेसमेंट सही करते हैं उसका अच्छा होता है। देन सोसाइटल परसेप्शंस भी चेंज हुआ है पिछले 10 सालों में, और भी होना चाहिए। और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है स्कूलों में, लेकिन नया नया तरीका है। हम एक्चुअली टाइम कम है, मैं सोचा हूँ बहुत सारी चीज़ें। आई during last 4 months I think about many things about implementation of yoga in entire education system. कहीं मौका मिले तो करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। मैडम यहाँ बहुत महत्वपूर्ण पद पर बैठा है, मैंने 20 साल सरकार में काम किया हूँ। बुरा मत माने मैडम, जैसे सरकार बदलते है पॉलिसी बदलती है, लेकिन सरकार में एक सेक्रेटरी बदलते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी बदलते हैं, पॉलिसी बदल देते। सो हमें अगेन वी गेट बैक टू, वो पुराना पॉलिसी नकार नहीं करते, अपने पॉलिसी लेकर आ जाते हैं। सो पुराना था पॉलिसी 1-2 साल के बाद अपने आप मर जाता है। सो हमने बहुत सारे चीज़ें कि हमारे जैसे लोग स्पिरिट से काम करते हैं कि रियली योगा एंड ट्रेडिशन, वो अभी पिछले 1 दशक में वो पॉलिसी मैटर में भी स्थिरता आई है। एनसीटीई ने 15 योगा एजुकेशन प्रोग्राम में योगा इंट्रोड्यूस किया है। एनसीईआरटी ने स्कूलों में लाया है कि 10+2 तक भी हमने सिलेबस, बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। ये कुछ चीज़ें कंस्ट्रेंट्स हैं हम एज ए योगा टीचर्स, एज ए सोसाइटी, नॉट एज एक्सपर्ट, हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज इट इज़ अवर कल्चर। हमारा कल्चर्स को हमारे बच्चों के अंदर में घुसाना है, उनको एक कल्चरली साउंड इंडियन बनाना है। वो ढंग से हमें सोचे कि
उनको फ्रीडम से लिव करना है, उनको ही शुड लिव विथ फ्रीडम, विथ विजडम. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग in the yoga implementation of yoga and school education. In these things, I thank you very much for the opportunity. Dhanyavad. I'll request Commander Abhijit Kumar. Thank you, Dr. Basavaraddi, for such an inspiring talk and getting clarity. Good morning, ladies and gentlemen. I am Commander Abhijit Kumar from INS Shivaji, which is a premier marine engineering training establishment of Indian Navy. Before you all presume that I have joined a wrong seminar, let me assure you, I am not going to talk about my profession. आज शस्त्र ही नहीं, शास्त्रों की बात करेंगे, शस्त्र की बात नहीं करेंगे. We'll leave it to some other day. Okay? Before we start the proceedings, I would request all my juniors to take out paper and pen and note down any important thing that is coming your way. Do not listen to such seminars in the form of Harikatha and go back and sleep off. You will forget everything. So please write down whatever is important that you come across. 5-6 points होंगे जो आप note down कर सकते हैं. It will be good for future references. बाद में सब भूल जाते हैं क्या discuss हुआ था and people just move on with their lives. So first important point, I will be speaking in Hindi and English. And as I speak to this to all my students at INS Shivaji, one of the most important thing of communication is the content. If your content is not good, no matter what kind of language you use, nobody is going to listen. So first, with that thing in the mind, let us start. This is my table of contents. We'll start with the introduction, why yoga, challenges, commercial viability, way ahead, and conclusions. Without wasting much time, purpose and uses of yoga. हमारे समाज में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं हमें. We have to follow dharma, which is duty, artha, financial prudence or financial earning or financial capability, kama, fulfillment of desires, and then moksha. Now why am I talking about purusharth in this gathering? We'll come to that. First, let us understand the purpose and uses of yoga. There will always be a confusion कि should the yoga be part of competitive sports or not? क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? So let us define what is the purpose and uses of yoga. Okay, I'll give an example of a car. The purpose of a car is to take you from place A to place B. But the uses of car, you can use it for earning in form of taxi, you can use it for sports, you can use it for a number of things. Correct? Understood? So this is the difference between purpose and uses of yoga also. The purpose of yoga is always a spiritual, it has a spiritual background to this. हमारे जो ऋषि मुनि थे इन्होंने कभी नहीं बोला था कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा करो. They always talked about spiritual progress as moksha, as a final destination, as a purpose of yoga. However, we are using it for various uses, which is mentioned on this slide. Physical, mental, emotional. Then comes the next slide. Why yoga? You see, it enhances the individual capability across the spectrum. There is no denying the fact. There are a lot of scientific surveys and that has been presented before me, which further tells you about the same thing. Mental agility, emotional robustness, definitely yes. Yama and niyama, balance in morality of the society, and it enhances the general health of citizen. There is a question of why yoga to school children. You see, there are a lot of spiritual practices which are available to a man presently. There is Bhakti Marg, there is Dhyan Marg, there are various other things are there, including some of the not so palatable methods of proceeding on a spiritual progress. But yoga is the only spiritual practice which covers all 4 aspects of Purusharth. It enhances your dharma, it tells you about your dharma, it talks about your artha, it can enhance your capability by which you can earn artha, it can have a control, and it has a positive impact on your kama, and then finally moksha also. So it touches upon all 4 aspects of your Purusharth. And that is why the previous slide was starting with Purusharth. So why yoga? Because yoga as a spiritual practice, it touches upon all 4 aspects of human life.
Moving ahead, what are the challenges? Discussed earlier, multicultural society, diverse belief systems. There is no quick fix solution for this. The only solution for such kind of activity of designing a common acceptable curriculum, NEP implementation status, these are some of the challenges that I have listed. First and foremost is we need to do and show that people who are practicing yoga are doing better in life. There is no other way. Nobody has come to your door to sell you a mobile phone because you understand the utility of a mobile phone and you have gone out and bought it on your own because of the utility aspect of the mobile phone. Similarly, if the yoga is also brought to people in a utility way, it is understood and it is accepted, only then it will be taken by the society. If you want to push down the throat of people, no, everybody should do yoga, everybody should do, I don't think it is a right model of acceptance in the general society. So we have to design models where people are successful while practicing yogic practices also as a role models. Okay. So next topic is designing a common curriculum, acceptable curriculum. Yes, it is a challenge. Various schools of thoughts, and it will take some effort for all the schools to come together and decide upon a common curriculum. This commonality and coming together, we have also seen the NEP 2020 implementation status. Not all states, as we speak, have accepted NEP, and it is a challenge for a culturally diverse society to come together and discuss on a common topic. Yes, it is a challenge. Then comes the additional load on students. Yes, students are already stressed out. Maths, physics, chemistry, biology, history, science, all subjects are eating up their space. There is no time for yoga. When do you introduce yoga? I, as an individual, have an opinion that one of the subjects of language can be looked upon as a replacement, can be replaced by yogic practices in the curriculum as an optional subject. We'll come to that. Then comes the last topic of commercial viability. जब तक commercially viable नहीं होगा, we will not have adequate number of teachers, adequate quality of teachers getting into the profession of yoga and taking the yogic profession or the profession of yoga learning and teaching process to the next generation. As of now, there are a lot of gaps. There are a lot of gaps in the quality of teachers that we get, the quality of teachers, the number of teachers that we have, and the volunteers, the number of volunteers that they want to become yogic teachers in the class 5, 6, 7, 8 or such classes. Coming to the next topic, commercial viability, I think I'll stress upon it slightly more. Role of teachers as role model. Teachers have the maximum interaction with students in school settings. If the teachers themselves are not motivated enough, if they are not paid enough, the motivation level of students will never be there towards yoga. This is an important aspect, which is a taboo topic. Yes, taboo topic of yoga and commerce. Understanding of money and how it works is something that I would like to probably share my ideas. It may be grossly wrong, but I think I'll share my ideas on this. First things, you can write it down, anybody who's got a pen and paper, money attracts passion. This is a very powerful statement. Money attracts passion. Amount of hard work that a farmer does and the amount of hard work that Virat Kohli does on a field is same. But there is money involved in cricket, so every child wants to become a cricketer, nobody wants to become a farmer. Understand this logic. Money attracts passion. If you have money in the system, if you have money as a yoga teacher, if you have enough commercial aspects taken care, people will get, the young students will take you as a role model and they will follow you. If you are a poor Master Dinanath of 70s, all those who have seen Agnipath, the followers may not be there. You may have respect, but you may not have people taking up yoga as a full-time profession. So there is always an understanding, there is always a conflict between what is it that people will or the young students will aspire to become. They will aspire to become somebody or something which attracts them, which attracts that power of attraction should be there. It comes from the power of money. Anybody who understands this thing will go ahead. If it is left to कि नहीं जैसे चल रहा है वैसे चले दो, तो I don't think we will have the system in place, but it may take some more time. Okay.
I'll also explain one aspect of Lakshmi. Generally हमारे समाज में ऐसा बोला गया है कि लक्ष्मी या ऐसी धारणा है, लक्ष्मी is always seen as a taboo topic और पैसे वाले जो हैं सब बदमाश होते हैं. The people who have got money are villains in our Bollywood. So it is a taboo topic. But that is, I'll just explain to you why this Lakshmi ji का photo जो लाल रखा है मैंने विष्णु लक्ष्मी जी का, why this photo is there. See, जब लक्ष्मी जी का उत्पन्न हुई समुद्र मंथन से, तो उनके साथ साथ एक अलक्ष्मी भी उत्पन्न हुई. Lakshmi ji is a representative of all good things, resources, well-being, wealth, everything good. A Lakshmi is also similar thing with a negative aspect. A Lakshmi is like कलेश, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, लड़ाई झगड़ा, इस टाइप की चीज़ें. ठीक है. तो जब भी हम लक्ष्मी जी को स्थापित करते हैं अपने घरों में, तो वी ऑलवेज स्थापित लक्ष्मी जी along with Ganesh ji and Saraswati ji. They represent the aspects of wisdom and knowledge. So if we have Lakshmi ji, this topic of Lakshmi ji, without Ganesh and the elements or the energies of Ganesh ji and Saraswati ji, will always bring along with it the negative aspects. If we understand this thing and include this knowledge or such kind of knowledge in our system, we will be able to change the perception that people have that yoga and money are two different direction or diversely opposite direction. It has to be combined at some point in time so that we take it forward. Okay, so we again topic of the same thing. The negative mindset that are associated with Lakshmi ji are trying to dispel those belief systems. ये लक्ष्मी जी के आरती का कुछ लाइनें लिखी हैं. कर्म प्रभाव प्रकाशिनी. It is the effect of your karma, which is in the form of Lakshmi. So how can you have a negative or chichi approach towards Lakshmi ji? नहीं मुझे नहीं चाहिए या मतलब do not talk about money. If you are talking anything, money has to be spoken. सर्व सब कुछ संभव हो जाता, मन नहीं घबराता. ये लक्ष्मी जी की आरती का है, आप सभी ने पढ़ा होगा, ध्यान होगा सबको. सब कुछ संभव हो जाता, मन नहीं घबराता. If you have resources, you can spread anything. If you can do anything and anywhere, and whatever you want to do, you can do. So the focus also has to be on yoga integrated with the commercial aspects of it, which is very taboo topic and not very many people will speak on this topic. Okay, so with that, if yoga has to be integrated, commercial aspects cannot be left behind. It also needs integration along with the society. So coming to the next topic of way ahead, see, as I see it, learning happens at 3 locations. एक तो सबसे पहला स्कूल. स्कूल में क्या दिक्कत है? स्कूल में it has to be an optional subject in lieu of a language. That is my point of view. It has to be an optional subject because if it is not an optional subject, it may not be accepted as a whole or in lieu of something it has to be there. Only then the load will be taken care. We are learning far more languages. 3 subject होते हैं और 3 languages होते हैं junior classes में. So we can replace one of the languages as an optional subject of yoga, introduction of yoga. And probably at higher education level, it can be a credit-based optional subject, definitely. These people or these kids who take up yoga as an optional subject, they will be the ambassadors of yoga for next generation. We need to understand this thing. People who will take yoga, whoever will take up yoga as a subject, will definitely do better. There is no doubt in my mind that they will do better than their peer group. And they will be the inspirer of next generation. Ki yes, we can do yoga and also attain our life goals of dharma, artha, kama before we turn to moksha. Okay, then next is yoga for kids at yoga centers. It is, I'm talking about something like karate classes, there are dance classes, there are skating classes and such things for kids. We also need to have at least dedicatedly one session for kids at such yoga centers wherever yoga is being taught and learned. For this, it will also require some amendment to teacher training course curriculum, whereas all my yoga instructors should be having or should be exposed to some elements of teaching yoga to kids. This is one of the thought process that can be implemented, and it is not a very difficult thing. It doesn't require external things. It also becomes a source of additional income for the teachers. So you understand there is a commercial viability also. If you have 10 kids coming to your yoga center, you will also earn something more from the kids' point of view. So economically also it is a viable thing and it can be done. And again, time for paper and pen. Kids have no ears. Anybody who thinks बच्चों के कान होते हैं, नहीं होते हैं, बच्चों के कान नहीं होते हैं, understand this thing, they will not listen to you. You may say whatever, they will not listen to you.
they only have eyes, 4 eyes, 2 इधर 2 इधर, वो देखेंगे आपको कर क्या रहे हो. So if parent is not doing yoga, students or kids will never do yoga. Yeah, so parents have to be integrated in this ecosystem of yoga. Parents have to be happy. They have to be practicing yoga and show that they are happy, or at least that happiness will come out. The moment parents start doing yoga themselves, the students will get inspired कि यार पापा कर रहे हैं तो मुझे भी करना है. And he sees that कि man, father and parents are always the first role models of kids. If parents are doing yoga, kids will also do yoga. We have to integrate. We cannot have a situation where load of all the expectations is burdened on the next generation. अगले generation को हम योगी बनाएंगे, हम तो भाई शांति से बैठेंगे. ये नहीं हो सकता है. ठीक है? So this is some of the points. These are the conclusion. 5 things, actionable inputs, school curriculum that we need to work on. Yoga centers where the teaching and learning process for school kids have to start, or it has to commence. It is in a very nascent stage as I see. Parents have to get involved. Teachers' pay scale is again another issue. We have to work out a method or mechanism where the pay scales of teachers are also lucrative so that the students get inspired to become yoga teachers and teachers in general. And then the TTC curriculum where some capsule on specifics to school education is also introduced. These are 5 recommendations. With that, I have finished. I have another just one small point to make. At the 100th year of Kaivalyadhama, I thank the organizers and Subodh sir in particular. And I wish to see at least 100 yoga centers of Kaivalyadhama by the time the nation celebrates its 100th anniversary. With that, I finish. Dhanyavad. Thank you. Thank you, Commander Abhijit. Such a lovely talk, and listening to such a perspective is always very interesting. So thank you, and we have 15 minutes more for question and answers. प्रश्न उत्तर के लिए, और प्रश्न मन में बने रहेंगे तो 15 मिनट बाद स्पीकर्स जब यहाँ से उतरने का प्रयास करें तो आप आके उनको प्रश्नों से रोक सकते हैं. So I will now leave it to the floor, but please be very brief and get to the point when you ask the question. So please raise your hands, and our volunteers are there and they'll get the mic to you. Yes. Hello, good afternoon everyone. I am B.S. Singh from Mumbai. So I have my question for Bedi ma'am. Ma'am, you talked about teacher and principal orientation. So I just wanted to point out if this much orientation programs are enough, or we have to implement at policy level so that once the principal changes, there is a new principal, then also that process continues. So do you agree that it has to be at the policy level, not just the orientation is enough? You are right. Actually, it has to be both levels, but the practice takes place at the school level. Like for my experience in school education is that if the school is not, the principal is not oriented, you can have 100 policies and nothing will work. एक principal हजारों lives को अपनी life में impact करता है. तो अगर हम principals को अपने साथ ले लें, चाहे थोड़े हों, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा इससे कि हम 100 पॉलिसीज़ बनाएं और कोई उसे एक्सेप्ट ना करे. एंड मैम सेकंड थिंग, जैसा कि आपने बोला इफ समबडी कैन हेल्प, सो आई हैव माय पोस्टर प्रेजेंटेशन हियर आल्सो वेयर आई हैव गिवन अ पाथ कि कैसे हम लोग योगा को स्कूल लेवल पे इंटीग्रेट कर सकते हैं. आई हैव गिवन सम सजेशंस. सो इन दैट आई हैव गिवन अ स्मॉल सजेशन दैट इन द एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स we can implement, like for example, yogic anatomy can be part of the biology subject, yogic philosophy can be part of the history subject, and yoga abhyas, practical sessions can be part of the physical education. So that I have suggested, and I have collected so many informations through state education websites and through national education policy, through research paper. So all these data I have. So if this will be some of your help, so I will be definitely ready to help you. धन्यवाद. आपका नाम बता दीजिए. Sorry sir. आपका नाम बता दीजिए. B.S. Singh. B.S. सिंह का पोस्टर लगा हुआ है, सब लोग जाके वहाँ देखें और इनसे चर्चा भी करें.
थैंक यू। धन्यवाद। यहाँ पर था कोई? Namaste. My question is in general to all the panelists here. First of all, thank you for such a nice session. And I understand that the objective here is how to integrate yoga in school education. So we are all thinking about how we can promote yoga at this, through the school level or education level. At the same time, keeping in mind the aim, that is, I think, self-health and, of course, better lifestyle. But when it comes to reality, correct me if I'm wrong, but I think yoga should be seen as a career opportunity. So can you please throw some light on whether it should be seen as a career opportunity first of all, and if yes, then what are the opportunities other than teaching, of course? Namaste. सबसे पहले just why I mentioned you, first of all it is for self. Yoga is a sadhana and anybody wants to do take it as a profession, first he should practice yoga and adopt the principles of yoga. जैसे कमांडर ने बताया कि पहले पेरेंट करे तब बच्चे करते हैं, तब आप करें तब अच्छे शिक्षक बनेंगे. आप अच्छे शिक्षक बनेंगे तो एक प्रोफेशन हो गया, रिसर्चर के लिए प्रोफेशन बन गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट में प्रोफेशन बन गया, कॉर्पोरेट सेक्शन में आपको योगा टीचर्स चाहिए, प्रोफेशन बन गया. बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुले हुए हैं कि सबसे पहले आपको अच्छे 3 चीज़ें होना चाहिए आपकी. इसलिए वो करिकुलम में हमें चाहिए साधक बने, शिक्षक बने और संशोधक बने. ये तीनों हो गए तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है कि आजकल लिस्ट लगी हुई है कि बाद में चर्चा करते हैं उसके बारे में. थैंक यू. सो यस, हियर इज, उसके बाद आप उन्हें दे दीजिएगा. So that's the... Namaste. I call upon the grace and the blessings of Swami Kaivalyadhama, and I do believe this is the highest calling for all of us as teachers to be here and to take his vision forward. My own teacher has been from here and I've had the blessings to be part of the school's learnings, not directly but indirectly. My name is Shraddha Setalvad and I'm a mother of 2 children and I'm also the founder of Yoga Kids in School. My journey began 15 years ago when I moved from Calcutta to Mumbai, and I came upon a teacher in a Montessori school who called upon me from my MBA and my modeling career to say, I wanted to become a yoga teacher. And I said, ma'am, this is like you're talking at a time for Montessori children where yoga is not even understood by most people. And she said, no, I believe this is your journey to do it. So I do feel that, we are going to change the history of India through this conference. And thank you very much, esteemed sir and panelists, for bringing us together. I'd just like to say a few words because I've understood the challenges and even the concerns that have been raised. Question पूछेगा madam. So, sir, because I've been doing yoga and I've actually set up the curriculum and everything with this, and I've taught in IB schools where the program is taught as a subject, also for teacher training and everything. I generally have a much larger level situation where I would like to address, because all of you are positions of power and, with the education and with ministries. So my belief is, having 2 children and my own daughter just graduated of Whitman from Syracuse, ma'am, I feel that, India is calling upon more and more international boards, and that is actually challenging the education system. So it's not about getting yoga into the system. It's somewhere, working with educationists, how we can actually get, Indian culture and even yoga or our own Indian system of education, given the prime importance in India, where yoga automatically becomes a part of it. So we got your point. You're trying to say that we have to strengthen the system, and incoming boards may pose a challenge. Yes, to sir, because that's the real concern here at the root level. Yeah. Do you have a comment on that? I will just 1 minute. It's well taken. One is it's a evolving होता है कि एक subjects में मैंने देखा है कि कभी-कभी हमने जल्दी implement करना चाहते हैं, constraints आते हैं, उसको समाधान निकलते हैं कि constant effort हम करते रहते हैं कि उसको implementation हो जाता है. जो
हमने 4 दशक पहले देख रहे थे, आज वो परिस्थिति बदल चुके हैं। और मुझे लगता है कि 1 दशक के बाद योगा एक पूरा कल्चरल इवोल्यूशन और एक एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छी ढंग से आएगा और इसका एक प्रोफेशन के रूप में ज़रूर आएगा। सो उसका पूरा जो ग्राउंड वर्क है कि बहुत सारे ग्राउंड वर्क एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आयुष डिपार्टमेंट में, हेल्थ मिनिस्ट्री में बहुत सारे हुआ है, लेकिन इन द ईयर्स टू कम डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैपन। So yeah, second last question we have, and there was a lady in green. हाँ बोलिए। हरिओम, इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ, चंद्रशेखर तिवारी नाम है मेरा। मेरा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि सरकार पॉलिसी लगाती है, स्कूल्स में योगा आया है, कॉलेज लेवल पे भी योगा आया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आई सीन दैट नॉन योगा टीचर इज टीचिंग योगा एंड मेकिंग योगा अनइंटरेस्टेड फॉर द पीपल। मतलब जो बच्चों को योगा का इंटरेस्ट होता है ना, वो इंटरेस्ट भी वो नॉन योगा टीचर उस इंटरेस्ट को मार देता है। तो व्हाट विल द करेक्ट सोल्यूशन फॉर दैट? देखिए, ये एक रियलिटी है, ये रियलिटी चेक चलता रहेगा। और जैसा कि कमांडर अभिजीत कुमार ने कहा, इसको अट्रैक्टिव दिखना पड़ेगा एज एन ऑप्शन। और हमारी एक और ज़रूरत है जो हमने दिल्ली में किया था, 1996 में ही किया था, कि हमने सारे योगा टीचर्स, हमारे पास 480 योगा टीचर्स थे सब स्कूलों में, हमने उनको रीट्रेन किया था, उनको बताया था कि उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है, और स्कूलों में योगा प्रचलित हो गया था। तो ये स्टेट टू स्टेट, टाइम टू टाइम ये इंटरवेंशन ज़रूरी होते हैं। देयर इज़, एज आई सेड, नॉट वन आंसर फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स एंड देयर इज़ नॉट वन साइज दैट फिट्स ऑल. There is a dynamic process which is to be continuous, and that's why the conferences like these are required. Thank you. So I agree with you. और ये बात हम लोगों ने एक सर्वे किया था NCERT के साथ with CBSE, and we found that actually 89% of CBSE schools have yoga being taught by physical education teachers. अब ये लोग उसमें कितने क्वालिफाइड हैं ये पता नहीं, बट दैट गेट्स अस टू एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट डेफिनेटली, दैट schools should be inspired to employ professional yoga teachers, because we shy away from employing yoga teachers in school, so that would be one of the ways. And then my personal question comes as former chairman of CBSE, कि could the board do something to inspire teachers, or it will be more regulatory in nature? Why not? The thought can be explored, it can be figured out, and एक साथ इकट्ठा पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो जाए ये ज़रूरी नहीं है. As I said earlier, small steps are necessary and small steps are also very, very meaningful and relevant. And if they have demonstration effect, that is even better. Thank you, ma'am. And last, एक एग्जाम्पल है, सॉरी आपका बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन 90s में जब योगा इंट्रोड्यूस कर रहे थे हम लोग, तब जो एग्जिस्टिंग टीचर्स को 200 आवर्स 1 महीने का ट्रेनिंग लेकर हमने चालू किया था. और सुबोध जी ने बहुत अच्छा कहा कि जो प्रिंसिपल है और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो इंटरेस्टेड है तो वो योगा टीम. मेरा जर्नी चालू हुआ था 88 में नवोदय, 86 में नवोदय विद्यालय आ गया. आई स्टार्टेड माई योगा प्रोफेशन एज ए योगा टीचर इन द नवोदय विद्यालय. ड्यूरिंग दोज टाइम द पोस्ट वॉज क्रिएटेड, आई हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन टेम्पररी बेसिस. लाइक दिस समथिंग हैज़ टू बी चेंज. सो उस चेंज के लिए हमें सोसाइटी के हिसाब से भी, हमें पेरेंट्स का बहुत सारे मुद्दे मैंने पॉइंट आउट किया है. सो वी हैव टू रिस्पॉन्सिबल सब लोग मिलकर किया तो हो जाएगा. थैंक यू. यहाँ केंद्रीय विद्यालय से भी टीचर्स आए हुए हैं, कृपया खड़े हो जाएं जो केंद्रीय विद्यालय से आए हुए हैं. सो आई थिंक मोर देन 15-20 टीचर्स केंद्रीय विद्यालय से हैं. धन्यवाद आपको. प्रिंसिपल्स भी हैं, लीडर्स भी हैं. And I think we should acknowledge, please sit down. केंद्रीय विद्यालय एक ऐसा मॉडल था जहाँ पर right from the beginning specific योग teachers को अपॉइंट किया गया था. Of course, it also faced challenges, but this would go a long way ahead
this taking this as a recommendation that school should be inspired to appoint yoga teachers. And I think we are heading towards the last question now before we break off for lunch. So anyone has been, हाँ आप green उसमें थी आप please. थैंक यू सर मैडम मेरा नाम डॉक्टर बंसी शाह और मैंने यही टॉपिक पे पीएचडी किया है सिग्निफिकेंस ऑफ योगा फॉर एनहांसिंग द एकेडमिक परफॉर्मेंस इन द एडोलेसेंट 5 साल हो गए हैं मुझे ये काम करते हुए मेरा यही क्वेश्चन आप लोग सबसे है कमांडर सर सेज शास्त्र से शास्त्र सो व्हाई कांट वी यूज शास्त्र एज अ शस्त्र और शस्त्र में मेरे हिसाब से वी आर फोकसिंग ऑन योगा प्रैक्टिस एंड पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एंड एवरीथिंग व्हाई कांट वी फोकस ऑन माइंड चित्त बच्चों के माइंड में क्या चल रहा है व्हाई दे आर फेसिंग ऑल दिस प्रॉब्लम्स हम सब हमारी ही बातें करते जाएंगे फिजिकल ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग व्हाई कांट वी यूज अवर शास्त्र में जो इंटेलिजेंस हमारे जो सूत्र है उसको हम बच्चों तक कैसे पहुंचाएंगे दैट इज व्हाट माय वर्क इज एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू यूज इट एज अ वेपन क्योंकि वो हमारा कल्चर आगे लेके जाएंगे वो हमारे देश को आगे लाएंगे जब उनकी हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे व्हाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन मन दैट इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु आर सिटिंग ऑन डेस्क प्लीज डू समथिंग हम सोचेंगे हम करेंगे बट वी कैन डू इट इफ दे हैव द वेपन्स मन की शक्ति एंड शास्त्र टीचर्स मन की शक्ति थैंक यू वेरी मच Okay. The biggest of battles and the biggest of wars are fought only if the logistics chain is supporting it. आप जब शस्त्र और शास्त्र की बात करते हैं हमें we have to put lot of resources in the field of yoga. Only then the yoga will become the mainstream. As of now, in the education system of India, yoga is not mainstream, and we don't need to be apologetic about it. It is not mainstream, and the idea is to dedicate so much of resources that it becomes mainstream. सर मेन स्ट्रीम सॉरी सर yes. लेकिन मेन स्ट्रीम बन सकती है अगर हर टीचर दिन में सिर्फ एक बार एक पतंजलि योग सूत्र सिर्फ एक सूत्र स्कूल में चालू तो करके देखते हैं हम लोग बस मैडम उसी के लिए हम बैठे हुए हैं कि कैसे रिक्वेस्ट करें So this is I am Dr. Dilip Patil. I am Professor HOD in Department of Medicine in one of the medical college. Summary of the total talk and what I have gained from last 2 hours of good amount of a scientific and real living discussion is that government is doing more proper work than what we are doing. We are supposed to propagate yoga in more vigorous way. The revolution always occurs in a both direction, from top downwards and from below upwards. We always, after going home, everybody will forget and will remain busy in their own profession. Why not to create son and daughters of Kaivalyadhama in real sense to create more and more of institution so that the propagation of yoga, acceptance and social evaluation will be to the 100% level. That is what my saying is. Thank you, sir. Thank you, and thank you everyone for being such a good audience and pertinent questions. We will conclude this session with recitation of the Shanti Mantra before we break off for lunch. और जो भी प्रश्न है, please do not hesitate to ask. The speakers are going to be here. So please sit with your back upright. Gently close your eyes. आँखों को बड़े विनम्र भाव से बंद करें. ध्यान आपका श्वास प्रश्वास पर. We'll spend few moments just observing your breath and your posture. बैठने की स्थिति को और श्वास प्रश्वास पे ध्यान देंगे. Gentle inhalation, gentle exhalation. Inhale gently. Om Purnamada Purnamedam
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Gently open your eyes. And now we'll slowly break. The lunch will start at 12:30. Thank you to all the panelists. Dhanyavad, dhanyavad, dhanyavad. Thank you. So along with the lunch break, we also have our authors of the newly released books yesterday outside Utpatti for signing. You can interact with them. I can ask them questions. So please, you can take a break now, and we reconvene at 2 p.m. here for our next panel discussion on fostering cultural synthesis in the school environment. So requesting you to please be back well in advance, at least 10 to 5 minutes before, so we can begin on time. Thank you.